Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, we are going to talk about the transient solution for RLC series circuit. I am going to talk about theory as well. I am going to talk about one numerical based on that. And in the next lecture, that is lecture number 8, I will discuss two more numericals based on that RLC series circuit. So here I am going to use the classical method. We have two techniques actually. We can go for classical technique, okay, and second we will discuss in future, that is the Laplace transform technique. And you will observe the Laplace transform technique is simpler than the classical theory. Anyway, so here I am going to talk about the RLC series circuit. Here you can say this is the R, L and C, all three are connected in series. So here with the help of this classical theory you can get both transient as well as the this one steady state solution. Okay, so I'm assuming the switch was open earlier. The switch was open. Okay, the switch was open. अगर switch open था तो current कितना था? Zero था. Okay, so current was zero earlier before t equal to 0. And you can say in this RLC three elements are there. A resistance is a energy consuming device. L and C, these two are the energy storage device. Inductor stores the energy in terms of current. And capacitor stores the energy in terms of voltage. Okay, so uh, what was the earlier current before t equal to 0? That is I0 minus 0. So just before and just after current will be same, because inductor stores the energy in terms of current, it opposes the change of current. So just before current was 0, so just after current would be 0. Clear? Similarly, capacitor stores the energy in terms of voltage. तो just before अगर current 0 था तो voltage भी 0 रहेगा. So just before and just after voltage would be same. And just before voltage कितना था? 0. So just after voltage would be 0. So I got these are the two initial conditions. I and okay. Now I'm closing the switch at t equal to 0. Close the switch and write KVL. Kirchhoff's voltage law. If you write the KVL, what is the voltage in case of inductor? L di by dt. In case of inductor, voltage equal to L di by dt plus in case of resistance, voltage equal to R into I plus in case of capacitor, voltage equal to 1 by C integration of I dt. Okay, so L di by dt plus Ri plus 1 upon C integration of I dt equal to supply voltage V. Clear? This is equation number 1. It will be useful later on also. So this is the equation number 1 is what? Integro differential equation, because integration is there, differentiation is there. So it is a integro differential equation, and we don't want integro differential equation. So हम क्या करते हैं? एक काम करते हैं, we will differentiate one. If you differentiate equation number 1, so you will get L d square I by dt square plus R di by dt plus 1 by C into I, and this voltage was step voltage constant, so differentiation of constant is 0. Okay, so since we know dy by dt, I am putting dy by dt equal to capital T. Okay, so you can say L d square I कॉमन ले लेता हूँ प्लस R d dy by dt मतलब d प्लस 1 by C और I कॉमन लिया. So you can say d square
plus if you divide by L, so you will get R by L D plus 1 by L C into I equal to this. So this is this equation number 2, you can say. Equation number 2, you can say it is a linear, ordinary, second order. This is the 2. इसका मतलब highest power of d क्या 2. So it is second order. Only one variable is there. It is ordinary and all terms are present. D square है, फिर D है, फिर D zero है. इसका मतलब it is a linear. It is a second order linear ordinary differential equation, homogeneous equation. Forcing function 0, it is a homogeneous equation, right? And please here, so RL सर्किट क्या था? फर्स्ट ऑर्डर. RC सर्किट क्या था? फर्स्ट ऑर्डर. RLC सर्किट क्या है? सेकंड ऑर्डर है बट लीनियर है. और LC क्या होगा? LC R नहीं है तो क्या होगा? R नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी. तो सेकंड ऑर्डर तो रहेगा बट क्या हो जाएगा? एक टर्म एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर. तो L और C सर्किट क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर बट नॉन लीनियर. इज इट क्लियर? So this you must know these things anyway. So I got d square plus r by ld plus 1 by lc I equal to 0. Okay, I'll continue this. मैं एक काम करता हूँ, मैं blank पेज पे जाता हूँ, रब करता हूँ ये. Okay, okay. So I'm going to use. I got here. I got d square plus what? R by ld plus 1 by lc into I equal to 0. I got it. Question number 2. Now this is what? A, you can say A, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A d square plus B D plus C I equal to 0. So you can find the two roots of D1 and D2. You will get two roots. D1 and D2 क्या आएंगे? दो रूट. माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर minus 4a into c upon 2a. ये ad square plus bd plus c equal to 0. So you will get two roots minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So यहाँ दो रूट कौन से आएंगे? d1 d2. कौन कौन से दो रूट आएंगे? d1 and d2. कौन से आएंगे? d1 and d2. माइनस b मतलब दिस माइनस r by l. माइनस b मतलब माइनस r by l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब दिस r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, राइट? माइनस 4 a कितना है? a मीन्स दिस मीन्स 1 है. 4 into 1. c कितना है? c मीन्स दिस 1 by lc अपॉन 2 a कितना है? 1. a कितना है? यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1. ओके, सो इफ यू टेक 2 यहाँ तो क्या आएगा? टू रूट्स आई एम गेटिंग माइनस r बाई 2l. ये 2 यहाँ आएगा तो माइनस 2l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या है? r और ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना. सो r बाई 2l का होल स्क्वायर, राइट ना? आर स्क्वायर और यहाँ ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा. यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 या r बाई 2l स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल 1 बाई एल सी. ओके ओके. नाउ यू कैन सी दिस इज द टू रूट्स आई एम गेटिंग. Okay, so depends on the nature of root
you will get the solution. Solution किसके मिलेगा? In terms of current. So depends on roots of d1 and d2. We will get general solution. We will get the general solution. Case number 1. I have case number 1. Case number 1 ये मैं ये करता हूँ r by 2l whole square this term is more than 1 by lc. अगर ये टर्म इससे ज्यादा है, this term is greater than this, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? If this term is greater than this, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा. So minus this plus something, right? क्या आएगा? You will get something, and that is positive. Minus this, you will get two roots, right? And both roots will be what? Both roots will be real and different. Will be real and different. Okay, so d1 and d2. d1 and d2 I am getting equal to, both roots are real, alpha 1 and alpha 2. मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, डिपेंड्स. नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. नेगेटिव है यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा. एक तो नेगेटिव दिख ही रहा है, एंड बोथ विल बी नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली. ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव 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 आएगा एक, और दूसरा भी नेगेटिव ही आएगा. बोथ विल बी नेगेटिव, बट आई एम राइटिंग हियर पॉजिटिव. सो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, राइट? सो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. Hence, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन I equal to what? K1. Yes, both roots are real and different. So what is the solution? K1 e raised to minus e raised to, suppose करो ये माइनस है, ये माइनस, so e raised to minus alpha 1 t plus K2 e raised to minus alpha 2 t. अगर ये माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, बट जनरली रूट्स विल बी नेगेटिव. दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन कब मिलेगा? व्हेन, सॉरी, ओके, व्हेन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. आई गॉट दिस सॉल्यूशन नंबर 3. दिस सॉल्यूशन नंबर 3. ओके, केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या है? यस, व्हाट इज द केस नंबर 2? 1 by this r by 2l, r by 2l का whole square, this square is less than 1 by lc. This is less than 1 by lc. What will happen? If this is less than this, so यहाँ नेगेटिव आएगा, राइट? नेगेटिव मतलब माइनस दिस, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? माइनस जे टर्म आ जाएगी. सो यू विल गेट रूट्स विल बी, यू विल गेट अल्फा minus alpha plus minus j beta. You will get two roots, complex conjugate roots. अगर if this term is less than this term, so you will get negative. And under root of minus 1 क्या होता है? j term होती ना, minus 1 का under root क्या होता है? j. तो यहाँ plus minus j term आ जाएगी, right? So you will get minus alpha, this is minus alpha plus minus j beta. Roots will be what? Roots will be complex conjugate. Be careful about it. Roots will be complex conjugate, right?
So I'm getting two roots, both will be complex conjugate, right? So solution will be what? क्या आएगा? Yes, I equal to what? I equal to k1 e raised to minus alpha t e raised to minus alpha t cos of beta t, sorry, plus k2 e raised to minus alpha t sin of beta t equal to e raised to minus alpha t कॉमन लिया, e raised to minus alpha t कॉमन लिया तो क्या आएगा k1 cos of beta t plus k2 sin of beta t. So this is the solution I am getting, k1 e raised to minus alpha t in bracket k1 cos of beta t plus k2 sin of beta t. So I am getting this solution. ये कब मिलने वाला है? This solution कब मिलने वाला है? जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो. अगेन आई एम राइटिंग 3. सो तीन सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. एक ये जब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो, दूसरा सॉल्यूशन ये जब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो. Okay, and one more solution I am going to get. So I am adding the pages. Just wait. I am adding the page. Case number 3. I am getting case number 3. क्या है case? Just going back. Case number 3 क्या है? 1 by r by 2l square. Sorry. Case number 3 क्या है? r by 2l whole square equal to what? 1 by LC. r by 2l square equal to 1 by LC. अगर ये इक्वल है तो जो आपके d1 and d2, what was the d1 and d2? क्या आए थे d1 d2? माइनस r by 2l, ऐसे ही आया था ना, माइनस r by 2l, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या था ये, r by 2l स्क्वायर माइनस 1 by LC, यही था ना? यस, ओके. तो अगर ये दोनों टर्म इक्वल है, दिस एंड दिस इक्वल टू है, so this term will be 0, right ना? If this and this equal to this, this equal to this, so this term will be 0. ये term क्या आ जाएगी? 0. So both roots will be real and different. So both roots will be real and different. Sorry, both roots are real and equal. Repeated. Both roots are real and equal, or both roots are real and repeated. Okay. So दोनों रूट्स क्या आ रहेंगे? d1 and d2. d1 and d2 क्या आएंगे? माइनस अल्फा माइनस अल्फा. बोथ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड. तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? i इक्वल टू, आई विल गेट द जनरल सॉल्यूशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन? आई एम गेटिंग i इक्वल टू व्हाट? यस, k1 e raised to minus alpha t plus k2 into t e raised to minus alpha t, right? So this is a general solution. So you can say equal to what? E raised to minus alpha t कॉमन लिया तो क्या आएगा? k1 plus k2 into t equal to I. So this is the solution I am getting. Question number again 3. So please याद रखना, we have depends on the roots. We have 3 solution, and I'm not going to drive these 3 solution. You have already studied in mathematics. I'm not going to talk about the mathematics. I'm going to talk about the application of mathematics. So these 3 solutions are already available हैं. आपको जस्ट क्या देखना है? रूट्स देखना है. रूट्स कैसे आए हैं? रिपीटेड आए हैं कि बोथ आर रियल एंड डिफरेंट आए हैं कि बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए. अकॉर्डिंगली you can write
the general solution directly. Now, from the initial condition, we will find the value of K1 and K2. And after finding the K1 and K2, you can put the value there and you will get the particular solution, right? So I'm stopping here only, and we will solve some numerical how to continue this problem. ओके सो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ लेने वाला हूँ. सो योर कंसेप्ट विल बी क्लियर. सो मेरा यहाँ का काम यही था कि कैसे रूट्स बदलते हैं और रूट के साथ साथ क्या जनरल सॉल्यूशन आने वाला है. एंड वंस यू नो द जनरल सॉल्यूशन you can find the value of K1 and K2 from initial condition, and once you know the value of K1 and K2 you will get particular solution. Okay, so I'm going to solve one numerical how to do it. Okay, so I'm going back. This is the मैं यहाँ स्टॉप इसको रब कर देता हूँ पहले. क्लियर ना. तो पहले आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, पहले आपको इनिशियल कंडीशन इनिशियलाइज करना है. दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं, दोनों का ये स्टोर करंट करता है तो करंट को इनिशियलाइज करना है, और कैपेसिटर क्या बोलता है वोल्टेज को, इसको इनिशियलाइज करना है. राइट, यू हैव टू राइट द केवीएल. याद रखना जब आप केवीएल लिखते हैं तो ये क्या है, ये क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, पूरा का पूरा टर्म. दिस होल टर्म indicates the voltage across capacitor. This indicates the voltage across inductor. Clear? So okay, so you will get equation number 1. This is a integral differential equation. इसको differentiate करेंगे तो second order linear ordinary homogeneous equation you will get. From here 2 से आपको क्या मिलेंगे, दो रूट मिलने वाले हैं, and from these two roots किस टाइप के उसके हिसाब से आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. Okay, so I'm going to talk about one numerical. First I'm rubbing it. Okay, so I'm going to talk one numerical. See here, RLC circuit is given, excited by DC voltage shown in figure 1 volt. This is 1 volt, and you are closing the switch at t equal to 0. So first of all, we have two energy storage element, inductor and capacitor. So IL0 minus equal to what? IL0 plus कितना होगा, 0. क्यों? बिकॉज स्विच ओपन था तो करंट फ्लो हो रहा था कि नहीं, नहीं हो रहा था. अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कितना करंट स्टोर किया होगा इंडक्टर ने, 0. सिमिलरली जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा था तो कैपेसिटर चार्ज है कि नहीं है, नहीं है. तो Vc0 माइनस equal to Vc0 plus equal to what? 0. Right? Now at t equal to 0, close the switch, and as you close the switch write KVL. Write KVL. When you write the KVL क्या आएगा, L di by dt. L कितना है, 2 di by dt plus Ri. R कितना है, 10 I plus C 1 by C कितना है, 1 by 12 1 by C integration of I dt equal to 1 volt V. Now this is a integral differential equation. Integration is there, differentiation is there, so we don't want this. So I want to differentiate it. और ये याद रखना, ये पूरी की पूरी टर्म है ना वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शो करते हैं. So this is equation number 1. This is useful, we will use it later on. Differentiate 1. When you differentiate 1, you will get 2 d square I by dt square plus 10 di by dt plus 1 upon 1 by 12, so 12 हो जाएगा, ये 12 I equal to 1 का differentiation 0 हो जाएगा. So you can say 2 से divide, I am dividing by 2, so you will write d square, 2 से divide किया तो क्या आएगा, 10 upon 2 5 dy by dt, d I कॉमन ले लूंगा मैं, प्लस 12 by 2 6 I कॉमन इक्वल टू 0.
equation number 2. Now you can see दो रूट मिलने वाले हैं. With the help of calculator you can find the roots. कैलकुलेटर में रूट्स निकालने की प्रोसेस दी है. You have studied in elementary courses. So but मेरे पास ये मालूम है दोनों का सम 5 चाहिए. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. इट इज वेरी सिंपल. दो रूट आने वाले हैं, दोनों का सम कितना चाहिए 5 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6. ये मेरे को मालूम है. तो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आई कैन फाइंड द रूट्स. मेरे को मालूम है दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए, मतलब 2 into 3. दोनों का सम 2 + 3 5. So this is giving the sum, this is giving the multiplication. So इसका मतलब हमारे पास दो रूट्स हैं d + 3 d + 2. दोनों का सम 5 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 है. You can use the calculator. You will get two roots d1 d2 equal to -3 -2. Okay, so this equal to 0, you will get d equal to -3. This equal to 0, if you will get d equal to -2. Okay, so you can see both roots are real and different. So if the roots are real and different, you will get the general solution directly. क्या है k1? Yes, what is the solution? k1 e raised to minus alpha t. k1 e raised to minus alpha 1 t plus k2 e raised to minus alpha 2 t. Alpha कितना है -2t. So -3 -2. So this is the solution. I got general solution. This is the general solution. Why it is called a general solution? Because this solution is having k1 and k2. It is in terms of k1 and k2. You can get general solution. So I am not going to find it. ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स में आपके रूट्स के हिसाब से आपके जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. नाउ k1 and k2 we can obtain. k1 and k2 can be obtained from initial condition. So the value of k1 and k2 can be obtained from initial condition. You can say this is the initial condition, right? What is the value of I at t equal to 0? 0. So I at t equal to 0 is 0. Sorry. Okay. What is the value of at t equal to 0? I कितना है? 0. You can see there. Okay. Okay. So क्या आएगा? I equal to 0 equal to k1 e raised to 0 plus k2 e raised to 0. T equal to 0. So e raised to 0 1. k1 plus k2 equal to k1 plus k2 equal to 0. This is equation number 4. I got one equation k1 plus k2 equal to 0. How many unknowns we have? We have two unknowns, k1 and k2. So you can't solve two unknowns from one equation. So I want one more equation in terms of k1 and k2. Right? So I want one more equation in terms of k1 and k2. So k1 and k2 equation कैसे आएगा? Yes, you can get. अगर इसको differentiate कर दो, differentiate 3. Differentiate 3. Differentiate 3 करेंगे तो क्या आएगा? di by dt. di by dt इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू -3k1 e raised to -3t minus 2 2k2 e raised to -2t. Equation number 4. Sorry, 5. So I got di by dt. Now
यहाँ से आपको वन मोर इक्वेशन मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द di by dt at 0 plus. So we will get di by dt 0 plus from equation 1. Always, please, this is the procedure we have to follow. यहाँ से मिलेगा di by dt 0 plus, so from 1. Okay, so what it shows, it shows the voltage Vc. कितना आया t equal to 0 0. You can see this shows the voltage Vc, right? कितना है voltage at t equal to 0 0 है. I कितना है? So we will get di by dt 0 plus from 1. So क्या है 2 di by dt 0 plus this 2 di by dt 0 plus 10. I की वैल्यू कितनी 0 पे? You know I की वैल्यू कितनी 0 पे? 0 plus whole term. This term indicates the Vc. What is the voltage Vc at 0 0 equal to what? 1. So I got di by dt 0 plus equal to what? This is 0, this is 0, 1 or a 2, 1 by 2. So I got equation number di by dt 0 plus 6. This 6 will put in the equation number 5. I will put the value of 6 di by dt 0 plus from 6 into 5. Okay, so एक काम करता हूँ, I will use the next page. Okay, so 5 कहाँ है? Okay, 5 कौन सा है? I got di by dt equal to minus 3k1 e raised to minus 3t minus 2k2 e raised to minus 2t. ये आपका कितना था? इक्वेशन नंबर 5. ओके, और 6 कितना आया है आपका? di by dt 0 प्लस कितना आया है? हाफ. ये 6 की वैल्यू हम 5 में रखेंगे. ओके, so I am going to use one more page. Okay, I'm going to use page. So I'm rubbing it. Okay, okay. So I got the equation number 5. क्या था 5 equation? क्या आया था आपका? Just see here. क्या आया था 5? di by dt. I got di by dt equal to what? Minus 3k1 e raised to minus 3t minus 2k2 e raised to minus 2t. I got this equation number 5. Right? 6 कितना आया आपका? di by dt 0 plus I got कितना आया है? हाफ 1 by 2. This is the 6. ये 6 की वैल्यू I am putting in 5. So when you put it at t equal to 0, at t equal to 0. So जैसे पुट करेंगे तो di by dt 0 plus कितना आएगा? 1 by 2 equal to minus 3k1 e raised to 0 minus 2k2 e raised to 0. ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है t equal to 0 पे. सो di by dt 0 प्लस इक्वल टू क्या है? हाफ. दिस इज हाफ. ये माइनस 3k1 e raised to 0 हो जाएगा. t की वैल्यू 0 और यहाँ t की वैल्यू 0. सो यू विल गेट minus 3k1 into 1 minus 3k1 minus 2k2 equal to 0.5. So I am getting the equation number, I think 7. Right? I got 7. And already I got equation number 4. क्या था? 4 क्या था? k1 plus k2 I got equal to 0. Equation number 4.
Earlier I got it. So we have two equations, this and this, 7 and 4. Solve 7 and 4. Clear? So you will get K1 and K2. अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड ऐड, तो आपको देखो ये चीज है क्या है, ये दो इक्वेशन है, क्लियर, और दो अननोन है, तो साइमल्टेनियस मेथड से करो या फिर यूज द कैलकुलेटर, you will get k1 and k2. So I'm multiplying by 3 and I'm adding, so this will be cancelled, क्योंकि 3 यहाँ आ जाएगा माइनस और प्लस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, सो 3k2 और माइनस 2k2, सो यू विल गेट k2. ओके, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, सॉरी 0.5. ये वैल्यू 0.5 की वैल्यू आप 4 में डाल दो या 7 में डालो, कहीं भी डालो. सो व्हेन यू पुट इन k2 इक्वल टू 0.5, सो k1 कितना आएगा minus 0.5. So I got the value of k1 and k2. We have to use the calculator. You can use the by simultaneous method, any one method, right? So you will get the k1 and k2. Once you know the value of k1 and k2, so from 3, just ये value k1 and k2 की 3 में रखना. Put in 3. Sorry, put in. What was the 3? जनरल सॉल्यूशन क्या था? k1 e raised to minus 3t था, प्लस k2 e raised to minus 2t था. ये इक्वेशन नंबर 3 था. I am putting the value of k1 and k2 here, so I will get I equal to what? k1. k1 कितना है? Minus 0.5 e raised to minus 3t plus k2 कितना है? 0.5 e raised to minus 2t. Okay, so I am going to put the value. So I am getting minus 0.5 e raised to minus 3t plus 0.5 e raised to minus 2t. This is the particular solution. That is the solution. इसको बोलते हैं particular solution. And that is the solution we want. That is the answer. You can get I equal to, this is the answer, I equal to minus 0.5 e raised to minus 3t plus 0.5 e raised to minus 2t. That is the solution. So these problems are simple, clear, lengthy and systematic. But if you solve such problem by using Laplace transform, so this will give the simple solution. Okay, so I'm stopping here. I'm coming back. I'm rubbing it. Okay. I will take two more problems based on the RLC circuit in the next lecture. Okay. I'm stopping here. Thank you. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.